Good evening to everyone. Thank you for joining our prime event today. I am Vikas Vaid, Chief Business Officer, Franchisee Business, and I'm joined by Mr. Amit Holani, who represents Bridgeweave Company, which is an artificial intelligence company. Amit will be taking you all through the product, the artificial intelligence product, and once his presentation is over, we will take questions from your side, and then we'll continue further the session. So अभी फिलहाल अमित होलानी आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देके यू कैन प्रेजेंट अमित या Yeah, thank you, Vikas. Hello, good evening, everyone. So I'll speak in English and Hindi. I hope everything is fine with everyone, both English and Hindi. You can put in the chat box. Okay, any got things it. that Fine. Good to see you all, everyone. Now on a weekend evening. I hope the week was good with the markets coming back into this mode. So let's go into the presentation now, and I'll be more than happy to take a lot of your questions post that. Okay, so I'd like to share my screen and go into the presentation. Yeah, because I hope my screen is visible and I'm audible. Okay, good evening, friends. Starting with our company, we are known in the market as Bridgeweave Invested AI. R is basically a UK-based firm. Okay, so we are well known in the market by the name of Invested AI. Our goal is to basically democratize investment using advanced technology in a very affordable way. We are trying to reach out to every individual across India in masses, making them both affordable and convenient at the same time. Okay. Talking about our founder team, basically these are our founders, these three people. As you can see, they have decades of their experience in the market among all these companies. Second is basically about our core team who handles the business. Tanu Singh is our CRO. She's an IMM Ahmedabad pass out. I am myself Amit Holani. I'm there in the market for last 22 years now. Okay. Now coming to this particular thing about how our model works. हमारा मॉडल कैसे वर्क करता है? So basically हमारा मॉडल वर्क करता है कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी पे. आपने अगर कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगी कि व्हाट इज कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी. हम में से सभी ने टेस्ला का नाम सुना हुआ है, राइट? One of the largest and one of the company where the promoter is holding the maximum. I mean, he's the richest promoter, right? So this is one of the company which is there in US, which is called Tesla. Okay. So this is based on the same model. Tesla uses computer vision technology for its self-driven cars. We are using the same computer vision technology for basically our financial models. Okay. So this is our USP. So हमने यही model. We are first in the industry to bring computer vision technology in India. Okay. हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर आपने चेस बोर्ड को देखा होगा, राइट? चेस बोर्ड में 64 खाने होते हैं. द सेम वे our models have more than 1064 boxes. Every box has been given a parameter specifically different from each other. We get we proudly say that हमने ये in-house ये model बनाया हुआ है. We get raw data from the Bloomberg. It's fed into our proprietary machines. All the features are using genetic algorithms and everything. हम उसको process करते हैं. And with the help of the machine, with the help of our artificial intelligence AI, we come out with the best of the best stocks in the market for you as an client, so that you can make the maximum out of those stocks in the short term, medium term,
for your benefit, right? So this is how our model works. We are first in the industry to use computer vision technology, right? आगे चलते हैं इसमें. How does AI investing work? आपने सभी ने, अगर आप जैसे कि मैं समझता हूँ, अभी तक हम लोग ट्रेडिशनली वर्क कल्चर से बिलीव करते हैं. आज आप में से किसी को भी अगर इन्वेस्ट करना है, राइट, हम लोग क्या करते हैं, हम अपने या फैमिली या फिर ब्रोकर या फिर किसी वेल नोन जिसको जानते हैं उनसे हम पूछते हैं कि हमको क्या लेना है, क्या बेचना है, राइट? सो देर इज ऑब्वियसली ए ह्यूमन बायस coming into it. With our AI and our machine, absolutely there is no human bias. So number one advantage is it reduces the human bias. Second is more calculation power. आप सब मुझसे एग्री करेंगे कि अगर 10 एनालिस्ट भी अगर मैं साथ में बिठाऊं तो एक मशीन उनसे ज्यादा कैलकुलेशन और ज्यादा आउटपुट दे सकती है, राइट, विद इन द डिफाइंड पीरियड. So more calculation power. Third is frequent insight generation. हम डेली इंसाइट जनरेट करते हैं. उसका मतलब क्या है? आज अगर क्लाइंट ए 1 दिसंबर को आता है तो उसके लिए अलग पोर्टफोलियो है. अगर कोई 5 दिसंबर को आता है, 6 दिसंबर को आता है, 10 दिसंबर को आता है, सभी के लिए डिफरेंट पोर्टफोलियो होते हैं एवरी डे. वो पोर्टफोलियो इस तरह से होता है कि वो जो मशीन को लगता है कि सपोज जो तारीख से नेक्स्ट 15 दिन, नेक्स्ट 1 महीने के लिए जो बेस्ट स्टॉक होंगे, वो क्लाइंट को नया स्टॉक सजेस्ट करता है. ऐसा नहीं है कि अगर कोई क्लाइंट को 1 दिसंबर को एक पोर्टफोलियो दिया हुआ है और 6 दिसंबर को कोई दूसरा क्लाइंट आ रहा है उसको भी सेम पोर्टफोलियो दिया जाएगा. 5-6 दिन में आजकल तो एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है. हमने देखा है 5-6 दिन में कई स्टॉक्स ऊपर हो जाते हैं, कई नीचे हो जाते हैं. तो क्लाइंट जो 6 या 7 तारीख को आता है उसका बेनिफिट बिल्कुल भी तकलीफ, उसके कोई बेनिफिट नहीं जाते हैं. बिकॉज मशीन आपको फ्रेश रिकमेंडेशन देती है based on all the parameters from that given day for the next 15 days, 1 month, 2 months, right? So frequent insight generation on a daily basis. Active trading strategies, we capture short-term gains for every 2 weeks so that आपका निफ्टी 500 के मुकाबले काफी सिग्निफिकेंट अल्फा बन सके, राइट? अब आते हैं आगे बढ़ते हुए. हमने अभी तक समझा हमारी फर्म कहाँ से है, हम क्या करते हैं, एआई क्या है, हमने मॉडल कैसे बनाए हुए हैं, बेसिकली ये मॉडल वर्क कैसे करते हैं. अब आते हैं ये अल्फा इंसाइट एक्चुअली है क्या. सो अल्फा इंसाइट इज अ हीरो प्रोडक्ट विद प्रभुदास लीलाधर. ये बेसिकली जैसे आप एज ए क्लाइंट जिस दिन सब्सक्राइब करते हो, राइट, सपोज आप अगर मंडे सब्सक्राइब करते हो तो आपको एआई रिकमेंडेड, आर्टिफिशियल रिकमेंडेड 16 स्टॉक की बास्केट दी जाती है हमारी तरफ से रेडीमेड. आपको ना किसी को पूछना है, ना किसको आपको जिक्र करना है कि भाई आपको क्या स्टॉक लेने हैं, क्या बेचने हैं. यू नो लॉन्गर हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन. Our AI, our machine gives you a ready-made 16 stock basket. What exactly you need to buy, going forward. इसमें ये 16 स्टॉक में भी हमने बाइफरकेट किया हुआ है फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट. इसको कैसे किया हुआ है? 50% ऑफ द पोर्टफोलियो 8 स्टॉक्स आर मोमेंटम, 25% ऑफ द पोर्टफोलियो 4 स्टॉक्स आर वैल्यू एंड द रिमेनिंग 25% ऑफ द पोर्टफोलियो 4 स्टॉक आर सेक्टर. सो आपको एक ही बास्केट में मोमेंटम, वैल्यू एज वेल एज सेक्टर का बेनिफिट्स मिलता है, राइट? डेली इनसाइट जनरेशन फॉर न्यू इन्वेस्टर विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. रीबैलेंसेस एवरी 2 weeks. इसके पीछे रीजन क्या है? सी अगर कोई भी स्टॉक में मोमेंटम है, राइट, कोई भी अच्छा स्टॉक है जिसको चलना है, उसको विद इन 8 to 14 डेज चल जाना चाहिए अगर मोमेंटम रियल में है तो. अगर नहीं है तो फिर वो जनरली फिजल आउट हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म स्टोरी हो जाती है, राइट? सो दैट इज द लॉजिक बिहाइंड व्हाई वी रीबैलेंस मोमेंटम स्टॉक एवरी 2 weeks. सो मोमेंटम स्टॉक हम लोग एवरी 2 week रीबैलेंस करते हैं. वैल्यू स्टॉक हम लोग एवरी 1 month रीबैलेंस करते हैं. और जो बाकी बचे 4 स्टॉक सेक्टर के वो हम लोग एवरी 2 months रीबैलेंस करते हैं, राइट? आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल एंड क्लियर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट? चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो बेसिकली आज से अगर हम 1.5-2 महीने पहले मिले होते तो मैं आपको दिखाता कि हमारे रिटर्न्स आर सुपीरियर इन द मार्केट. वी वर ऑलमोस्ट इन द रेंज ऑफ 85-86% ग्रॉस एनुअली रिटर्न्स, राइट? हमको सबको पता है लास्ट 1-2 महीने में हम मार्केट जो कहते हैं ना, वाह से आहा तक आ गई, राइट? सब लोग पहले कहते थे वाह मार्केट, बाद में आहा मार्केट हो गई थी. थैंक्स टू द मार्केट, थैंक्स टू इलेक्शन रिजल्ट, थैंक्स टू Trump winning over there is some sanity which has come to the equity markets now. Last 1 week or so, markets are going up. FIs have been clear buyers last couple of days. Thanks to them, but market गिरा तो है, right? हम ये कहना चाहते हैं honestly कि हम AI है, हम मशीन है, हम डिसिप्लिन है, नो डाउट अबाउट इट, बट हम है तो इक्विटी मार्केट से, राइट?
तो हम कोई अलग दुनिया से नहीं है। अगर इक्विटी मार्केट गिरेगा तो हम भी गिरेंगे, बट द बेनिफिट इज अगर इक्विटी मार्केट गिरता है तो हमारा एंडेवर इज दिस दैट वी विल फॉल लेसर और लिटिल क्लोज बाय। व्हेन द मार्केट्स आर गोइंग अप, हम मार्केट और हम निफ्टी 500 से ज्यादा रिटर्न बनाएंगे, राइट? सो मैं आपको एक हाफ मैं आपको हाफ लेने को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं भी पॉज ले रहा हूं। हम अपने आप को कंपेयर करते हैं निफ्टी 500 से। उसका रीजन क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर 62% का रिटर्न बना रहा हूं, अगर मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये सबसे अच्छा रिटर्न है, राइट? बट अगर मैं आपको ये कहूं कि हम भले एआई है, मशीन है, लेकिन इक्विटी के मार्केट से हम बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना है, तो मुझे आपसे कुछ आपके सामने स्टेटिस्टिक्स रखने पड़ेगी हम किसके सामने ज्यादा रिटर्न बना रहे हैं। तो उसके कारण से हम अपने आप को कंपेयर करते हैं निफ्टी 500 से, राइट? ये ऐसा नहीं है कि निफ्टी 500 वाले स्टॉक है, बट कंपैरिजन के अगर माध्यम से अगर मैं किसी को कंपेयर करूं, तो हम अपने आप को निफ्टी 500 से कंपेयर करते हैं, राइट? लेट्स सी कि हाफ ए मिनट ऑफ पॉज। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने लास्ट एक साल में 62% का रिटर्न दिया है ग्रॉस, इवन आफ्टर करेक्शन। जो मार्केट में लास्ट 2 महीने का करेक्शन हो गया, राइट, उसके बावजूद आज की तारीख में हमारे रिटर्न आर इन द रेंज ऑफ 62% ग्रॉस लास्ट 12 मंथ्स। जस्ट इमेजिन, keep a figure, you can write it on the chat box, you can keep that it in your mind. just imagine निफ्टी 500 ने यही लास्ट 12 महीनों में कितने रिटर्न दिए होंगे, राइट? प्लीज इमेजिन। यू हैव ए हाफ ए मिनट ऑफ पॉज। Okay, all right. So I hope everyone has put a figure to his mind. In fact, जैसे मैंने आपको बताया, after correction we have made a return of 62% gross in the same period of last 12 months. Nifty 500 has given a return of 27.3%. ये रिटर्न आज से 2 महीने पहले जब हमारा 85 था, ये रिटर्न था 41%। मार्केट करेक्शन के बाद इनका भी रिटर्न गिरा है। निफ्टी 500 हैज हैविंग ए रिटर्न ऑफ 27%। लेकिन आप अगर स्क्रीन पे अगर देख सकते हैं, बावजूद करेक्शन के हमने निफ्टी 500 से मोर देन डबल का रिटर्न दिया है इन दिस पीरियड ऑफ 12, राइट? सो इट इज क्लियर आउट परफॉर्मेंस ऑफ द निफ्टी 500। दैट इज व्हाट आई सेड, राइट? आज अगर आपको नॉर्मल रिटर्न बनाने हैं तो आप एफडी, आपको अगर रिस्क नहीं लेना है आप एफडी कीजिए। आपको नॉर्मल रिटर्न आप म्यूचुअल फंड कीजिए, जिसमें आपको 12 से 15% का रिटर्न आपको एनुअली बन सकता है। बट इफ यू वांट टू मेक ए लिटिल हायर रिटर्न विद लेस रिस्क, Alpha Insight is our hero basket which can help you create the alpha over the Nifty 500, right? अब आते हैं कैसे, राइट? अब इसको बनाए कैसे, कैसे अल्फा क्रिएट करते हैं हम लोग, ये जानते हैं, राइट? इट्स नॉट मैजिक, इट्स प्योर एआई पावर, इट्स प्योर मशीन पावर, एंड थर्ड आर प्योर डिसिप्लिन्ड अप्रोच, राइट? आई कम टू दैट नाउ। ये हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दी हुई है आपके सामने। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, लास्ट 12 मंथ्स में हमने निफ्टी 500 से कैसे आउट परफॉर्म किया। अगर आप फर्स्ट देख सकते हैं ये वाला, उसमें अगर आप देखोगे तो डार्क शेड में जो है वो अल्फा इनसाइड है, लाइट शेड वाला निफ्टी 500 है। अगर निफ्टी 500 लास्ट 1 मंथ में -6.4% गिरा है, हम भी गिरे हैं -5.5%। लास्ट 3 मंथ्स में निफ्टी 500 3.7% गिरा है, हम गिरे हैं 1.1%। Last 6 months में Nifty 500 has fallen 8.3%. We have risen 20%. Last 12 months में Nifty 500 has given a return of positive return of 27%. हमने clear outperformance दी है. We have made a return of 62% generated for our clients, right? That is why we are able to create a significant alpha of the Nifty 500. How to get the best out of alpha? As a client, always take a long-term view. Liquidity है, no returns are made in 15 days, 30 days. You have to keep a horizon. वैसे भी आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो कीप ए होराइजन ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। रीबैलेंस रेगुलरली। हमको अपना डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग हमको नहीं छोड़ना है, राइट? वो आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, बट कुछ पैसा आप एआई मशीन को दीजिए और उसमें हम अपना इंटरफियरेंस नहीं करेंगे, राइट? रीबैलेंस रेगुलरली एज व्हाट मशीन इज सजेस्टिंग यू फॉर दैट एआई डेडिकेटेड बास्केट, राइट? थर्ड, ऑलवेज रिमेंबर वैल्यू विल गेट गो अप एंड डाउन इन द शॉर्ट टर्म, राइट? अब हम समझते हैं एआई का रिटर्न क्या है, एआई का बास्केट क्या है, राइट? सॉरी। सो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही आप अल्फा इनसाइट में सब्सक्राइब करते हो, आपको बेसिकली 16 स्टॉक का बास्केट मिलता है, राइट? रेडीमेड बास्केट बेस्ट ऑफ मोमेंटम, वैल्यू एंड सेक्टर। इसका हम, मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया ना, वी हैव आवर एंडेवर इज टू मेक इट अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट एट द सेम टाइम। अफोर्डेबल इसको कैसे बनाते हैं? वी आर जस्ट चार्जिंग यू 25,000 रुपीज प्लस जीएसटी
पूरे 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है हमारे। देर इज नो एस्ट्रिक, नो हिडन चार्जेस, नथिंग। हम पूरे 1 साल का आपसे 25,000 प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं, दैट्स अबाउट इट। अगर आप इमेजिन करो, आपका अगर पोर्टफोलियो मिनिमम 10 लाख का भी है ना, तो डेली अप एंड डाउन आपका 20 से 25,000 का मार्क टू मार्क अप एंड डाउन हो जाता है। हम बात करें 25,000 पूरे 1 साल के लिए, जिसमें आपको महीने में 2 बार, साल में 24 बार हमारी तरफ से रेडीमेड बास्केट आती है कि आपको क्या लेना है और क्या बेचना है, राइट। सो दिस इज, वी हैव मेड इट वेरी अफोर्डेबल फॉर यू। सेकेंड इज, आपको इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सजेशन स्टॉक्स का हम आपको देंगे कि आपको क्या लेना है, क्या बेचना है। एग्जीक्यूशन, जो ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा, पीएल का डीलर आपके खुद के अकाउंट में पीएल की हेड ऑफिस बॉम्बे से करेगा, तो आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप सर्विस में हो, आप अगर बिजनेस में हो, तो आपका कंसंट्रेशन और आपका टाइम, हम बिल्कुल भी इसमें इसमें आपका टाइम इन्वॉल्व नहीं रह सकता है, सो दैट यू कैन बी गुड एट योर वर्क, यू कैन बिजी विद योर वर्क, research as well as your execution is taken care by PL and us, right? So this is what we wanted to present to you. अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड पे, शार्प रेशियो। सो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट शार्प रेशियो, but for your convenience, let me tell you, Sharpe ratio is a ratio which kinds of confirms you that how much risk you are taking in any investment, and in front of small risk, how much returns you are generating. So if your risk is less and if your returns are high, that means your Sharpe ratio is higher. Any Sharpe ratio which is 0 to 1 is good, 1 to 3 is fine, anything above 3 is excellent. Hamara Sharpe ratio is about 3, which means, which kinds of establish and stamps our claim that we are generating high returns, बट हम क्लाइंट की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए हाई रिटर्न बना रहे हैं। इसका मतलब हम लो रिस्क ले रहे हैं, नहीं रिस्क लेना गलत वर्ड होगा, जीरो रिस्क लेना गलत वर्ड होगा, इक्विटी है, हम रिस्क ले रहे हैं बट ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, राइट। सो आवर शार्प रेशियो इज काइंड ऑफ मोर देन 3, which shows less risk, high returns, right? Let's move forward. So basically कैसे करते हैं हम लोग, it's not magic, it's pure discipline and the power of AI and the machine. हम जो भी आपको स्टॉक देते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम एआई एंड मशीन, दूसरा डिसिप्लिन अप्रोच क्या है, एक भी स्टॉक, ना ही 15 दिन, 30 महीना, 30 दिन या फिर 1 साल में, कभी भी कोई भी स्टॉक आपको पेनी स्टॉक नहीं मिलेगा। आपको सारे गुड पेडिग्री स्टॉक्स, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स मिलेंगे। इसका मतलब आप एज ए क्लाइंट कहीं पे भी अटकोगे नहीं, कहीं फंसोगे नहीं, राइट। जिसमें पेनी स्टॉक में प्रॉब्लम क्या है कि एंट्री तो इजी है, एग्जिट मुश्किल है। सो हमारे सारे स्टॉक्स आर ऑल गुड पेडिग्री स्टॉक्स, ऑल हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, राइट। Second is, we have a fixed criteria where we keep 1,000 to 700 cap, right? होना चाहिए वो कंपनीज का। तीसरा, एटलीस्ट 3 to 5 मार्केट एनालिस्ट शुड बी कवरिंग आवर स्टॉक्स। ऐसा नहीं कि किसी ने नाम ही नहीं सुना और वो स्टॉक आ गया, राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू present to you all. We are there around. We will be more than happy to take any questions now. हम अगर इसको क्वेश्चन, सो मैं आपको अगर इसका जिस्ट बताना चाहूँ ना, तो हमने अभी तक क्या देखा है, हाउ इज एआई, व्हाट एआई डज फॉर यू, व्हाट आर द पावर ऑफ एआई, हमारी मॉडल कैसे बनती है, हम कौन है, हमारा कैसे वर्क करती है, सेल्फ ड्रिवन बेसिकली कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी, मॉडल कैसे बनती है, हाउ मेनी स्टॉक्स आर देयर इन द पोर्टफोलियो, मिनिमम 10 लाख का इन्वेस्टमेंट वैल्यू हम लोग सजेस्ट करते हैं, एवरी स्टॉक इज डिवाइडेड इक्वली इनटू व्हाटएवर अमाउंट यू आर पुटिंग, राइट। सो अब आते हैं, अगर इसका मैं आपको पूरा निचोड़ निकाल के दूं, इसका पूरा जिस्ट अगर हम लोग बात करें, जो भी हमने अभी तक लास्ट हाफ एन आवर में समझा है, एज ए क्लाइंट आपको क्या क्या बेनिफिट है इसमें, राइट। नंबर 1, हाई रिटर्न्स, राइट। आपने सभी ने देखा है, इवन आफ्टर करेक्शन, मार्केट में भयंकर करेक्शन के बाद भी हमारे रिटर्न्स आर इन द रेंज ऑफ 62% ग्रॉस, विच इज वेरी वेरी हाई, राइट। 62% बनाना कोई छोटी बात नहीं होती है। सेकेंड इज, लो रिस्क लेके काम कर रहे हैं, क्लाइंट का सेफ्टी हम इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कोई भी पेनी स्टॉक नहीं है। सो हाई रिटर्न्स, लो रिस्क फॉर द क्लाइंट। नंबर 3, बहुत ही शानदार और फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो है फॉर एनी क्लाइंट। बाय, सी म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा है, राइट। म्यूचुअल फंड सभी लोग बोलते हैं बहुत सही है, म्यूचुअल फंड है तो सही है। अगर आपको 12-15% का भी रिटर्न बनाना है, कंसिस्टेंटली आप बना सकते हो, राइट। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हो, 5-10 साल का विजन रखते हो। बट म्यूचुअल फंड में अगर आप एक चीज देखो ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि देयर आर टू लार्ज डाइवर्सिफिकेशन, वहां पे 70-80-90 स्टॉक भी होते हैं कभी कभी, राइट। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन ओवर हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप 1 ईयर के पहले कोई भी रीजन से कोई भी चीज करना चाहो, तो का पेनल्टी है।
इन आर टर्म्स, दूसरा पीएमएस की तो बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज पीएमएस एक अलग कैटेगरी हो गई जिसमें 50 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। पोर्टफोलियो में द बेनिफिट फॉर यू ऑल इज इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल पोर्टफोलियो। व्हाई? नंबर वन, आप उसमें टॉप अप कर सकते हो। आपने 10 लाख रुपए लगाए, आपको पोर्टफोलियो अच्छा लगा, आप 20, 25, 50 लाख रुपए और डाल दो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। उल्टा देखते हैं, आपने 40, 50 लाख रुपए दिया दिया, आपको विड्रॉ करना है, आप विड्रॉ कर सकते हो। पार्शियली विड्रॉ, फुल्ली विड्रॉ, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, राइट। आप इसमें स्टॉप कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, पार्शियली विड्रॉ कर सकते हो, फुल्ली विड्रॉ कर सकते हो। पूरे 1 साल के लिए आपको हमारा सपोर्ट रहेगा इन टर्म्स ऑफ एडवाइजरी, राइट। सो एक पावर आ जाती है, यू हैव द टोटल कंट्रोल ओवर व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। नंबर 4, मैंने जैसा कि आपको बताया, आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ही मिनिमल होगा, जस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ गिविंग योर कंफर्मेशन टू द एग्जीक्यूशन। रिसर्च हम देंगे, एग्जीक्यूशन पीएल करेगा, राइट। सो पांचवी बात, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, ऑल आवर स्टॉक्स आर गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आप ले रहे हो, आपको पता है कि आप क्या ले रहे हो, क्या बेच रहे हो, राइट। देयर इज नथिंग हिडन, इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट टू यू। सो दिस इज व्हाई आई कॉल्ड इट एज अ हीरो प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टर एआई, which is called Alpha Insight. It is an exclusive portfolio with PL. Please take the advantage of this. AI is going to be the future. This is something very unique, which not many people are knowing this, but people who are knowing it are taking the maximum advantage of it, right? Thank you, friends, for the patience hearing. I'll be more than happy to take any questions from you now. Thank you so much. एनी क्वेश्चंस, एनी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। वो वारंट्स के लिए रहता है, वो वारंट्स का अगर प्रेफरेंशियल है अमित, हैव तो यू उसमें भी सेम कंडीशन है कि वारंट का पैसा गॉट एनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? जब बोर्ड मीटिंग अप्रूव हो जाएगा उस टाइम Can आपसे check in देना the है chat 5 box. दिन में। वो भी अपफ्रंट नहीं है, तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, आप अनम्यूट होकर भी क्वेश्चन पूछ टाइम सकते हो। ऑफ व्हेन दे कॉल यू हैव टू पे ऐसे। Vikas, can you mute yourself? And what's your minimum? Yeah, so I can see a question from Mr. Umang Parekh. Have you backtested the basket for big correction in the past? Yes, Umang ji, हमने back saying yes, of course, we are into equity markets, so we will definitely have an impact on the equity markets. हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बोल रहे हैं कि इक्विटी मार्केट तो इसमें हमारा इंडिवर क्या है, व्हेन मार्केट गिरती है तो हम कम गिरेंगे, मार्केट बढ़ेगी तो हम उससे ज्यादा बढ़ेंगे। दैट इज हाउ वी क्रिएट अल्फा ओवर द निफ्टी 500, राइट। सो यस, वी हैव बैक टेस्टेड देम, वी हैव सीन लॉट ऑफ बाउट्स ऑफ, जब बोलते हैं ना महीने 2 महीने में मंदी मार्केट में आती है, तो यस, मार्केट में हमने कैसे परफॉर्म किया, वी हैव दैट डेटा, वी कैन शेयर विद यू आल्सो, राइट उमंग जी। Second thing, what are the charges? Right. So as I've confirmed to you, Umang ji, we are just charging you on a transparent basis, fixed charge of 25,000 plus GST for the full 1 year. Right? आप अगर 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो भी उतना ही चार्ज है, आप अगर 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो तो भी उतना ही चार्ज है। हम लोग फिक्स फी लेते हैं, वी आर नॉट चार्जिंग यू बेसिस ऑन द एयूएम, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अगर आपने 5 लाख 10 लाख जो भी इन्वेस्ट किया, हमारी फीस उतनी है। आपने 1 करोड़ 10 करोड़ कितना भी किया तो भी हमारी फीस उतनी है, राइट। वी आर नॉट चार्जिंग कि आप ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो हम ज्यादा चार्ज करेंगे, बिल्कुल नहीं, कोई एस्ट्रिक नहीं है। इट इज अ फ्लैट फी फॉर द फुल 1 year, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम पंकज जी, वर्क्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग? ऑनेस्टली पंकज जी, नहीं, इंट्राडे इज अ डिफरेंट बॉल गेम। इसमें बेसिकली इंट्राडे हम प्लेइंग में हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। हम एक्चुअली रीबैलेंस करते हैं, आधा पोर्टफोलियो 14 डेज में, 25% पोर्टफोलियो 1 मंथ में, एंड बाकी का 25% पोर्टफोलियो 2 मंथ्स में, राइट। Umang ji, what will be the brokerage for this in line to my account only for different? Of course, Umang ji, it will be in line account. There is no separate charges from our side. The trades are going to happen आपके खुद के पीएल के अकाउंट में, कहीं बाहर नहीं होने वाले। और जो भी उसमें आज की तारीख में एप्लीकेबल है वही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, कोई प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, सो प्लीज बी कंफर्टेबल। Sir, there are two questions in Q&A section as well. Can you just read Charges out? for the plan and what is the last 3 years CAGR? So our CAGR for last 3 years is in the range of 65 to 70% for this over a period of 3 years. This year, our last 12 months returns are in the range of 62% as on date. In terms of charges, I already mentioned 25,000 plus GST, 29,500 is what we charge for the full 1 year. Nothing apart from that. Not even single rupee apart from that. Any other questions you can see?
लेकिन Uh, कॉन्ट्रैक्ट See, this is a thank you, Amit, for this wonderful session. Welcome. Giving this और insight. 25-30 साल When से you मतलब पूरा look at conventional investing, अच्छे stock picking is always, I think there is a question. I can, But I Javed, there's can a put question that. if you can answer. Yeah, it's a question from Mr. Yadnik Desai. What is the minimum investment value? So, Yadnik ji, we always suggest minimum investment as 10 lakh rupees and above, because what we have understood is that is an optimum investment, minimum optimum investment, what can give you the best returns, right? But although if you want to just test it out with little lesser, right, you can get in touch with PL team. They will guide you out if they can do something for you. Okay. But our suggestion to you would be minimum 10 lakh and above, so that it works perfectly fine for you in terms of yield basis, right? What do you, Vikas? डालना और इनका स्पेशलिटी है Conventional investing is always difficult. People make losses, but if you go via program, then your probability of making money increases. So using Amit's presentation, I urge everybody to go through the presentation and see the returns kya hai. I think yes. So with this, thank you everyone for coming, and we would appreciate your feedback. You can give your feedback to our teams, and we will come back to you. Thank you. कैश फ्लो प्रॉब्लम थी Thank you, Amit. I hope everyone will take advantage of this particular superhero product and subscribe and can get the benefit of the AI and the machines. Thank you so much. वोडाफोन का भी QIP आ रहा है क्या तो